स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, संडे की क्लास, कल की क्लास में प्रथम से हमने चैप्टर पूरा लगभग पढ़ लिया था। है ना, इसको अपन नोट्स लिखते लिखते एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट। वो आपका इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाला हीटिंग इफेक्ट था, जिससे चीजें गर्म हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे अब आपका जो इलेक्ट्रिक वायर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट विल बिकम अ मैग्नेट। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो एक समझ डालना, मैग्नेट। मैग्नेट, मैग्नेट, इसमें लिखो, magnets are the material which exerts, magnets are the material that exerts, magnets are the material that exerts a magnetic force, exerts a magnetic force, exerts a magnetic force on on other magnets, on other magnets, or 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 materials like iron, cobalt, nickel, or materials like iron, cobalt, nickel. ठीक है, उसके बाद आगे, the magnetic force, the magnetic force, the magnetic force can be attractive or repulsive. The magnetic force can be attractive or repulsive. The magnetic force can be attractive or repulsive. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। अट्रैक्टिव एज वेल एज एंड कैन बी repulsive. ठीक है, तो वाई का निकल का सिंबल है CONI, पेको नहीं है ना, पेको नहीं, FP पेको नहीं। ठीक है, ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको तीनों को। आयरन आपका Fe, कोबाल्ट CONI। ठीक है, नेक्स्ट, next line is the magnets have following properties. Magnets have following properties. Magnets have following properties. ये first point ये attraction वाले लिखना। A magnet attracts materials like, a magnet attracts material like, a magnet attracts materials like iron, cobalt, and nickel. Magnet attracts materials like iron, cobalt, and nickel. Second point, the attraction is maximum at the ends of the magnet. The attraction is maximum. The attraction is maximum at the ends. The attraction is maximum at the ends of the magnet. The attraction is maximum at the ends of the magnet. Next line, next point.
When a bar magnet is suspended by an 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 unspun thread. Unspun, UNSPUN, unspun thread. ये बताया था मैंने कल कि आपकी थ्रेड पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसी घूमी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी थ्रेड में बाहर मैग्नेट को टंगाओगे तो वो पहले खुद भी अपने पोजीशन पर आने के लिए ऐसे घूमेगी ना, तो इट शुड बी अनस्पन थ्रेड। ठीक है, ओके। When a bar magnet is suspended by an unspun thread, comma, it orients itself in it orients ORIENT, it orients itself in north south direction, north south direction, north south direction. And last point is now, when two magnets are brought close together, when two magnets are brought close together, when two magnets are brought close together, comma, like poles repel, like poles repel, and unlike poles attract each other, and unlike pole attracts each other. Like poles repel and unlike poles attract each other. ठीक है, एक लाइन और बस मैग्नेट बनते किससे उसका एक लाइन लिखते हैं नीचे लाइन में लिखा अगला पैराग्राफ ना, पॉइंट्स हो गया ना, ये इतनी प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना, मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम naturally occurring substances called magnets were made magnets were made from naturally occurring substances called lodestone, LODESTON, called lodestone, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 lodestone, ब्रैकेट में फॉर्मूला Fe3O4, ब्रैकेट also known as magnetite, also known as magnetite, MAGNETITE, also known as magnetite. ठीक है, नेक्स्ट थिंग डालना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए इसके बारे में डिस्कशन किया था ना कि मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होगी जहां पे कोई मटेरियल उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन उस फील्ड में ही वो मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा, उस फील्ड के बाहर उस मैग्नेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो हाइफन डाल के, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where its influence, the space around a magnet where its influence, influence का मतलब यहाँ पे क्या है, attraction repulsion, influence can be experienced, where its influence can be experienced, is called the magnetic field of that magnet, is called the magnetic field of that magnet.
ठीक है, नेक्स्ट टाइम में द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, the magnetic field in a given region can be represented with the help of, can be represented with the help of can be represented with the help of magnetic field lines, magnetic field lines, magnetic field lines. Full stop. It can be drawn with the help of a magnetic compass. It can be drawn with the help of a magnetic compass. It can be drawn with the help of a magnetic compass. It can be drawn with the help of a magnetic compass. Magnetic compass क्या है वो भी लिखेंगे नेक्स्ट टाइम लेटर. A magnetic compass consists of a small magnetic needle. A magnetic compass consists of a small magnetic needle. ये सब कल मैं समझाया हूँ लोग, अभी कल और डिस्कस कर लेंगे. A magnetic compass consists of a small magnetic needle pivoted in the compass. Pivoted. Fixed है compass में ना एक तरफ से. Pivoted. Pivoted in the compass. बीच से फिक्स है ना वो, तो ऐसे ऐसे घूम सकती है बस, उसको पाइवट बोल रहे हैं. ठीक है, pivoted in the compass. Full stop. The needle is free to move in a horizontal plane. The needle is free to move in a horizontal plane. The needle is free to move in a horizontal plane. ना horizontal plane में वो पूरा 360 डिग्री तक घूम सकती है needle. ठीक है, free to move in a horizontal plane. Full stop. The arrowhead is the north pole. The arrowhead is the north pole. The arrowhead is the north pole. And tail is the south pole. And tail is the south pole. The arrowhead is the north pole. उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना, बिकॉज वो मैग्नेटिक निडल भी, मतलब वो निडल भी जो है वो जो पॉइंट कर रही है डायरेक्शन को, दैट टू इज मेड अप ऑफ मैग्नेट. तो वो भी बार मैग्नेट की तरह, तो उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा. तो जो एरो हेड है उसका, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ दैट बार मैग्नेट, और जो उसका टेल है दैट इज द साउथ पोल ऑफ दैट बार मैग्नेट. ठीक है, ओके, इज द साउथ पोल. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एज फॉलोज. Some properties of magnetic field lines are as follows. Some properties of magnetic field lines are as follows. ठीक है, तो अभी तक जो अपन लिखे हैं वो क्या क्या है कि मैग्नेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो अदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा, या कुछ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, पहला चीज. दूसरा, कोई भी मैग्नेट को अगर बार मैग्नेट को आप ऐसे सस्पेंड कर दो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो अपन लिखे हैं, इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मतलब आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड बार मैग्नेट का साउथ पोल विल पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. उसका रीजन क्या होता है कि इट इज बिलीव दैट कि अर्थ के सेंटर में एक बड़ा सा मैग्नेट है जो इस बार मैग्नेट को उस तरीके से हमेशा ओरिएंट करता है. ठीक है, उसके अलावा पोल्स की बात करें थे अपन कि अगर दो मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो लाइक पोल्स अगर पास पास होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर.
whereas unlike poles will attract each other. ठीक है, अब किसी भी मैग्नेट का एक एरिया होगा जहां पे उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, उस स्पेस को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उसको हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसको बनाने के अपन क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास। कंपास कैसा होता है, मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच इज फ्री टू मूव हॉरिजॉन्टली, है ना, इन अ प्लेन। उसका हेड जो है, उसका जो एरो हेड है, दैट पॉइंट्स, दैट इज द नॉर्थ पोल, एंड जो उसका टेल है दैट इज द साउथ पोल। ठीक है, ज्यादा क्लियर है जितना लिखे हैं अभी तक। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। पहला पॉइंट देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, magnetic field lines are imaginary lines magnetic field lines are imaginary lines used to show the magnetic field in a given region. Magnetic field lines are imaginary lines used to show the magnetic field in a given region. In a given region. Used to show the magnetic field in a given region. ठीक है, इमेजिनरी इसलिए क्योंकि अगर आप एक मैग्नेट को हाथ में रखोगे तो आपको वो लाइंस ऐसी दिखेंगी नहीं, वो इमेजिनरी लाइंस है जो अपन थियोरेटिकली पेपर में बना सकते हैं, बट दोज आर नॉट विजिबल इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, ओके, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। Magnetic field lines are closed continuous curves and are directed from and are directed from and are directed from and are directed from north pole to south pole outside the magnet, and are directed from north pole to south pole outside the magnet, north pole to south pole outside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet. ठीक है, इसको बनाते हैं, फिर कुछ बाकी तो दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे अपन। ये आपका बाहर मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जितनी फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज कर्व होंगी which will start from north pole to south pole outside the magnet and inside the magnet south pole to north pole. Close curves. ठीक है, बना लो। एरो जरूर बनाना, उनसे पता चला कि वो लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है।
थर्ड पॉइंट, ये समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट, closed continuous curve starting from north pole to south pole outside the magnet, inside the magnet south pole to north pole. ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ थर्ड पॉइंट लिखना. थर्ड पॉइंट, the tangent at any point on the magnetic field line, the tangent at any point on the magnetic field line, the tangent at any point on the magnetic field line, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point. At that point. ठीक है, इसी में एक नीचे पॉइंट के नीचे डायग्राम बनाना, एक ऐसे ही फील्ड बना के यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देना और यहाँ लिख देना बी. बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, उसमें उसको बना लो. बन सकता है, बट जो फील्ड का डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ से साउथ ही, इसमें अपन ऐसे ही शो करेंगे. आप एक्चुअली ये बन क्यों रहा है, कैसा बन रहा है यहाँ पे, आप जब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास रखोगे ना, समझ लोगे, आप जब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास रखोगे ना, दैट नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. बस वही बना है टेंजेंट. समझ रहे हो टेंजेंट क्यों बना रहे हैं? दैट टेंजेंट इज एक्चुअली शोइंग द मैग्नेटिक कंपास नीडल. ठीक है, हाँ हो गया, ये बना लिए. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, magnetic field lines are close together. Magnetic field lines are close together. Magnetic field lines are closer together. Are closer together. Closer together in the region where the magnetic field is strong. Magnetic field lines are closer together in the region where the magnetic field is strong. And are widely spread widely separated and are widely separated in the region where the magnetic field is weak. In the region, widely separated in the region where the magnetic field is weak. Widely separated in the region where the magnetic field is weak. ठीक है, इसका भी डायग्राम आपको शो कर देगा. पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए वाली रीजन में क्राउडिंग ज्यादा है ना, दे आर क्लोजर टुगेदर एट ए पोजीशन इन कंपैरिजन टू बी. तो ए पे आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और बी पॉइंट पे लिख लेना वीक मैग्नेटिक फील्ड. ये जो पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये 5 पॉइंट लिखना है अपने को. मतलब हो गया, ये डायग्राम बन गया. चलो लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे. ये पॉइंट समझ में आया सबको? जहां पे लाइंस पास पे है वहां पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पे आपकी लाइंस दूर है एक दूसरे से वहां पे आपकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होगी. ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट
each other. Magnetic field lines do not intersect each other. Magnetic field lines do not intersect each other. Full stop. This is because this is because if you place the magnetic compass at the point of intersection, this is because if you place the magnetic compass, this is because if you place the magnetic compass at the point of intersection, at the point of intersection, it will orient itself, it will orient itself, it will orient itself, it will orient itself only in one direction. एक पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास एक ही डायरेक्शन शो करेगा, दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता. Orient itself only in one direction and not in two directions. And not in two directions. And not in two directions. ठीक है, इसका डायग्राम बनाना. ये मैग्नेटिक लाइंस, एक की दूसरी मैग्नेटिक लाइन है ना. ये रहा इंटरसेक्शन, एक टेंजेंट ऐसा बनाना और दूसरा टेंजेंट इसके साथ. ठीक है, ऊपर जा रही है 90 डिग्री बनाओ खुद का. ये इसको देख के मत बनाओ. दो दो लाइंस बनाओ, उसके कोई भी दो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो. जैसे हमने इसके लिए किया है ना, वैसे अगर यहाँ पे एक और कर्व आ जाए ऐसे, तो इसके लिए ऐसा करेंगे. ठीक है, चलो हो गया. हाँ, तो बी का मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड ही है ना. दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता. एक पॉइंट पे डायरेक्शन एक ही होगा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते. ठीक है, क्लियर है. ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये सब हुई बात कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी. अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर की, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टर्ड, है ना. तो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ऑस्टर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट करते हुए कंपास की रीडिंग को देखा था. एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, वो करंट मेजरमेंट कर रहे थे एक सर्किट में, और उस सर्किट के पास में एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस था. तो ही ऑब्जर्व कि जब करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट किया वायर में, मैग्नेटिक कंपास जो साइड में रखा था वो डिफ्लेक्ट किया. तो अचानक से उनकी निगाह में कि ये डिफ्लेक्ट क्यों किया, उनको लगा शायद हो सकता है ऐसे ही हो गया होगा. तो उन्होंने फिर पोलैरिटी चेंज करी, सर्किट की पोलैरिटी चेंज करी. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, मतलब जो नेगेटिव का डायरेक्शन पहले जो था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. अब यहाँ उनको लगा कि कुछ ना कुछ इस सर्किट के कारण ही कंपास में होगा. तो वहां उन्होंने कंक्लूड किया कि दैट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. का कारण है कि वो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्ट हो रहा है. मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उसका मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है. और एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होता है जब उसके आसपास एक और मैग्नेट हो. तो वहां क्या था, वो वायर, वो भी तब जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो a current carrying conductor behaves like a magnet. This is what is meant by magnetic effect of electric current. ठीक है, हिंट डालो. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, इसमें लिखेंगे it was discovered by accidentally discovered लिखना. It was accidentally discovered by
HC Oersted. H.C. Oersted. Oersted. HC Oersted. It was discovered. It was accidentally discovered by H.C. Oersted. So stop. In his experiment, he observed that. In his experiment, he observed that. In his experiment, he observed that when an electric current flows in a wire. In his experiment, he observed that when an electric current flows in a wire, when an electric current flows in a wire, the needle of the compass deflects. When an electric current flows in a wire, the needle of the compass deflects. So stop. The needle of the compass is itself a small magnet. The needle of the compass is itself a small magnet. The needle of the compass is itself a small magnet. The needle of the compass is itself a small magnet. So stop. Now a magnet can be deflected. Now a magnet can be deflected. Now a magnet can be deflected. Now a magnet can be deflected only by a magnetic field. Only by a magnetic field. From this, Oersted concluded that. From this, Oersted concluded that. From this, Oersted concluded that an electric current flowing in a wire created. From this, Oersted concluded that an electric current flowing in a wire, an electric current flowing in a wire created a magnetic field, which deflected the needle of the compass, Electric current flowing in a wire created a magnetic field which deflected the needle of the compass. Oersted also found that by changing the direction of current, Oersted also found that by changing the direction of current, the needle deflects in of current, the needle deflects in opposite direction. The needle deflects in opposite direction. ये मैंने बताया था कि जब ऑस्टर ने करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन पहले ऐसे हो रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. इसका मतलब करंट पे ही डिपेंड कर रहा है उसका डिफ्लेक्शन. दैट करंट कैरिंग वायर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. तो उसकी खुद की फील्ड बन गई और उस फील्ड के अंदर ही आ रहा होगा वो कंपास, तभी डिफ्लेक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता. ठीक है. ओके, दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट डालना magnetic field by a current carrying wire. Magnetic field by a current carrying wire. Magnetic field by a current carrying wire. देखिए अब करंट कैरिंग वायर इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, है ना.
तो करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट है, तो उसकी भी एक फील्ड होगी, जैसे बाहर मैग्नेट की फील्ड थी क्लोज कर्व, वैसे इसकी भी कुछ फील्ड होगी। तो फील्ड कैसी होगी, शेप, और वो किस पे डिपेंड करेगी, समझ रहे हैं? तो उसको अपन को देखना है, पर अपन इसको तीन केस में पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक सर्कुलर वायर के लिए, और एक कॉइल्ड वायर के लिए, सोलर वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन केस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लिखना केस वन। केस वन, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका डायरेक्शन और इसका करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें आइकन डाल के लिखना, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the direction of the magnetic field produced by a current carrying straight conductor, the direction of magnetic field the direction of the magnetic field produced by a current carrying straight conductor, current carrying straight conductor can be determined by, can be determined by, can be determined by, can be determined by right hand thumb rule, right hand thumb rule, right hand thumb rule। और फील्ड किस तरह की होगी उसको भी लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये तो अपन डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे ये लिखते हैं ना, कि राइट हैंड थंब रूल यूज करके इसका डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, वो लेफ्ट हैंड है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखना, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, when current passes through a straight conductor, the magnetic field around it is, the magnetic field around it is, the magnetic field around it is, around it is in the form of a concentric circles, in the form of a concentric circle, in the form of a concentric circle with the conductor at the center, with the conductor at the center, with the conductor at the center। ठीक है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो दिस विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, करंट अगर ऐसा जा रहा है तो आपका फील्ड जो है वो, अभी फिलहाल ऐसा डायरेक्शन में अपन अभी रूल लिखेंगे। ठीक है, बनाओ डायग्राम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द कंडक्टर एट द सेंटर। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, फिर अपन राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं, इसका मतलब क्या है राइट हैंड थंब रूल का। ये एक प्लेन में है ना, ये समझ रहे हैं ना, मतलब अगर ये वायर है ना तो ऐसे ही बन रहा है ये सर्कल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम्म,
हो गया? राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं नीचे लिखना, राइट हैंड थंब रूल, एक स्पेलिंग डालना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे आई लिखना ना, ये करंट आई, और ये एरो बनाया हो ना सर्कल्स में, राइट हैंड थंब रूल लिखना इसका रूल का। इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, if you imagine to hold a current carrying conductor, if you imagine to hold a current carrying conductor in your right hand, in your right hand, in your right hand, with your thumb straight, with your thumb straight, with your thumb straight and pointing in the direction of current, with your thumb straight and pointing in the direction of current, and pointing in the direction of current, comma, the direction of the curl of fingers, the direction of curl of fingers, the direction of curl of fingers, the direction of curl of fingers represents the direction of magnetic field, represents the direction of magnetic field, represents the direction of magnetic field. ठीक है, मतलब अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वी हैव टू होल्ड दिस कंडक्टर बाय बाय आवर राइट हैंड, है ना, ऐसे कि थंब स्ट्रेट रहे एंड थंब का डायरेक्शन कैसा हो, करंट की तरफ, जो कि नीचे से ऊपर है, सही है। तब उस समय जो आपकी उंगलियों का घुमाव है, द कर्ल ऑफ फिंगर्स, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज दिस। ये एक पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल बड़ा, फिर तीसरा सर्कल और बड़ा, चौथा सर्कल और बड़ा, ऐसे उसमें हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, समझ रहे हैं? ये पूरा वायर नहीं, पूरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो पूरे वायर में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, राइट। तो ये है आपका राइट हैंड। वही अगर आपने इसको, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ा है कि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया, दिस इज क्लॉकवाइज and this is anti-clockwise, समझ ले। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट टाइम में लिखना, the magnitude of magnetic field, 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 इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, पहले भी रिप्रेजेंट किए टीचर डायग्राम में, the magnitude of magnetic field comma capital B depends upon two factors, depends upon two factors, depends upon two factors, depends upon two factors। ए बी करके लिखेंगे, फर्स्ट ए करके लिखना, फर्स्ट फैक्टर ए, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डी अभी जो लिखे हो, डी तो है ही नहीं कुछ, डी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। एंड सेकंड पॉइंट लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, the strength of magnetic field B, the strength of magnetic field B
is inversely proportional to distance is inversely proportional to distance of the point of observation. Distance of the point of observation. Distance of the point of observation. तो पहले वाले का b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, अभी यहाँ पे b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दोनों पॉइंट लिखना, कंबाइन करेंगे तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i बाई r, स्मॉल आर। हाँ, रेजिस्टेंस तो करंट पे डिपेंड, मतलब करंट उस पर डिपेंड करेगा ना, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था स्ट्रेट कंडक्टर का। नेक्स्ट लिखना केस नंबर 2। केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। वहां स्ट्रेट वायर था, नाउ इट इज सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि इसका भी डायरेक्शन का रूल सेम रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। बस जो चीज थंब दिखा रहा था वो अब कर्व दिखाएगा, कर्व ऑफ द फिंगर, और जो चीज कर्व ऑफ द फिंगर दिखा रहा था वो थंब दिखाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। संडे को टेस्ट बोला है मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स का, आज मंडे है, बहुत टाइम आप लोग के पास है कार्बन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के। चलो थैंक यू।